Hi friends, on continuation of chapter number 10, S block element. We start with the group number 1. In today's session we will discuss about two most important part. After this, oxides and halides, that is anomalous behavior and diagonal relationship. But before that we have to discuss a small two topic, that is oxide and hydroxides, halides and oxoacids. Now we already discussed about oxides in reaction with air. When first group element react with oxygen, you get the varieties of oxide, that is normal oxide, peroxide and superoxide. So let's start. Under the appropriate condition, pure compounds like simple oxide, peroxide and superoxide may be prepared. The increased stability of peroxide or superoxide as the size of metal ion increases means पोटेशियम से रुबीडियम and रुबीडियम से सीजियम की तरफ जाओगे, size increase होगा, then this is becomes more stable. The anion by the larger cation through the lattice energy effect. These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxide according to following equation. Now this is simple oxide, that is M2O, when treated with water is converted to 2M plus plus 2OH minus. So basically Na plus plus OH minus, you get NaOH. M2O2 plus 2Na2H2O. Once again you can put Na2O2 plus 2H2O, you get 2Na plus 2OH minus 2NaOH plus H2O2. Last 2MO2, you can put a KO2, 2 mole of KO2 plus 2 mole of H2O. You get 2K plus plus 2OH minus plus H2O2 plus O2. So this is all about your oxides and hydroxides. We already discussed halide also, reaction with halogen. 2M plus X2, you get 2MX. Yes or no? The alkyl metal halide, that is MX, are all high melting point, colorless crystalline solid. The melting and boiling point always follow the trend. ये trend याद रख लीजिएगा. Fluoride is greater than to this fluoride is greater than to this bromide is greater than to this iodide. Means when you come up to the down, atomic number increases, boiling point is always increases. All these halides are soluble in water. The low solubility of LiF generally ionic नहीं है, covalent है. क्यों? Because of smaller size, high ionization enthalpy, Li species are undergoes covalent characteristics, and due to its high lattice enthalpy, whereas the low solubility of CSI, cesium iodide, due to the smaller hydration enthalpy of its two ion. Hydration enthalpy का भी order हमने पढ़ा था. Lithium has highest hydration enthalpy. When you come to the down, lithium से sodium, potassium, rubidium and cesium, hydration enthalpy decrease होती जाएगी. Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate. LiCl is soluble in pyridine also. So basically LiCl is not soluble in water just because of covalent characteristics. It's not an ionic one. Next point, salts of oxoacids. Basically oxoacid किसको बुलाया जाता है? Acid itself behaves as a base or hydroxyl salt. Yes, acid behaves as their hydroxide salts are entitled as oxoacid. The most important example, H2CO3, that is carbonic acid, and H2SO4. Oxoacids are those in which the acidic proton is on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom, as for example carbonic acid, H2CO3. Basically H2CO3 is acid which releases H plus. तो सबसे पहले एक H plus रिलीज करेगा, क्या बनेगा? HCO3 minus and H plus. दूसरा भी एक H plus रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा? 2H plus plus CO3 minus 2. बट अब देखिए H2CO3 किस हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है? CO ब्रैकेट OH twice. बेसिकली CO कंपोनेंट के साथ हाइड्रोक्साइल के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए.
and it's converted into H2CO3. ये H2CO3 का फॉर्म बन गया, that is acid converted into corresponding hydroxide salts, that is entitled as oxo acids. दूसरा एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, वेल नोन एसिड इन योर केमिस्ट्री लेबोरेटरी. अब ये कन्वर्ट हो रहा है SO2OH twice, तो बेसिकली SO2 इन ब्रैकेट OH twice, तो ये SO2 का हाइड्रोक्साइल सॉल्ट बन गया. The alkali metals from salts with all the oxo acids, they are generally soluble in water and thermally stable. बेसिकली कई बार लंबे समय तक H2SO4 की बॉटल को आप कैप्ट करोगे तो लोअर बॉटम पार्ट के अंदर आपको व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट मिलेंगे. दैट इज नथिंग बट H2SO4 के ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो सॉल्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. दैट इज SO2OH twice. नेक्स्ट ग्रुप नंबर 1, कार्बोनेट्स एंड इट्स मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स का मतलब CO3 स्पीशीज, that is M2CO3, and hydrogen carbonate, that is MHCO3. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो K2CO3 and NaHCO3. Also are highly stable to heat. As the electropositive characteristics increases down to the group, the stability of carbonate and hydrogen carbonate increases. Lithium, most important one marker question. Lithium carbonate is not so stable to heat just because lithium being a smaller in size polarize large CO3 minus 2 and leading to formation of more stable Li2O and CO2 is released. तो आपको Li2CO3 नहीं मिलेगा. इसका रीजन क्या है? लिथियम बहुत छोटी स्पीशीज है और CO3 minus 2 is a really very large species. तो बेसिकली जब भी लिथियम कार्बोनेट के साथ अट्रैक्ट का ट्राई करेगा तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ कार्बोनेट लिथियम मेक ऑक्साइड, दैट इज Li2O, and carbon dioxide molecule is removed. Its hydrogen carbonate does not exist as a solid and its hydrogen carbonate is also LiHCO3 is also not exist. वन मार्कर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं, खास ध्यान रखना. अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनालोमस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप. फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट एनालोमस बिहेवियर ऑफ लिथियम. नाउ एनोमलस बिहेवियर क्यों है? जस्ट बिकॉज लिथियम इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1, एटॉमिक नंबर इज 3, just because of smaller size in the group, and second just because of high ionization enthalpy. high ionization enthalpy सर आपने तो बोला था ग्रुप नंबर 1 की ionization enthalpy बहुत कम होती है, तो here in case lithium is exceptional case. Why? Just because electronic configuration of lithium is 1s2 2s1. This outermost shell electron, that is 2s1, is really very close to this nucleus. So if you want to remove this 2s1 electron, it is really very difficult. Means you have to apply lots of amount of energy, and only due to this reason lithium salts are not ionic and covalent. Just because lithium never want to remove one electron, lithium always want to share the electron. So let's start few points. मीन्स कहने का इंटेंशन, लिथियम के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो लिथियम डिफरेंट बिहेव कर रहा है बाकी सारे फैमिली मेंबर से. जैसे लिथियम एंड वाटर दे हैव वेरी गुड टेंडेंसी विथ ईच अदर, बट सोडियम को पानी में डालोगे तो ब्लास्ट करेगा. सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर सकते हैं NaHCO3, बट लिथियम का नहीं कर सकते हैं. पोटेशियम और सोडियम का कार्बोनेट भी फॉर्म होगा Na2CO3 K2CO3, बट लिथियम का नहीं फिजिबल होगा. और बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है, जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट है, आप सिंपल नाइफ से कट कर सकते हो, लिथियम थोड़ा सा हार्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द फ्यू प्रॉपर्टीज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग फैमिली मेंबर. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट, लिथियम इज मच हार्डर एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स रिमेनिंग फैमिली मेंबर सोडियम, पोटेशियम, एज आई टोल्ड यू, can easily cut by my knife, but lithium is harder.
Second, lithium is the least reactive but the strongest reducing reagent. lithium का strongest reducing reagent हमने previous session में भी पढ़ा है. It forms only monoxides with oxygen. जैसे सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा. पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, पेरोक्साइड भी बना सकता है. On combustion in air, it forms mainly monoxide, Li2O, and nitride, that is Li3N, unlike the other metals. Third, LiCl is deliquescent and crystalline as a hydrate, that is हमने ये भी पढ़ा था hydration enthalpy में, that is LiCl.2H2O, but the other alkali metal chloride do not form hydrides. Lithium bicarbonate, that is LiHCO3, is not obtained in the solid form but stable in only solution form. Lithium nitrate on heating gives Li2O, while the another elements nitride decomposes and form nitrite. जैसे 4 mole of LiNO3 when decomposed, you get 2 mole of Li2O, that is lithium oxide, and NO2 and O2 are released. While in case of NaNO3 when decomposed, you get NaNO2 plus O2. Lithium, unlike another elements, metal forms no ethanide derivative with ethyne. Ethanide derivative का मतलब ethyne is CH triple bond CH. When CH triple bond with CH in the presence of sodium, let's discuss the equation first. CH triple bond CH plus 2 mole of sodium. So basically sodium has tendency to remove this acidic proton H and H, and you get Na C triple bond C, Na, and H2 is released. This does not gives by lithium, means यहाँ पे आप 2 mole of lithium लिख लोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा. So this is called ethanide derivative. Ethanide derivative does not give by lithium. LiF and Li2O are completely much less soluble in water than the corresponding compound of the another alkali metals. So these are the total 7 distinguished point that you have to remember. 3 मार्क के अंदर ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है. 3 मार्क के अंदर पूछेंगे. All the 7 points you have to write it down. Fine. So this is all about your first most important point, that is anomalous behavior of lithium. Second most important point discuss करते हैं diagonal relationship. Let's start with the diagonal relationship. The similarity in the property shown by diagonally placed element of second and third period in the modern periodic table is called diagonal relationship. In our syllabus we have 2 different diagonal relationship, that is lithium with magnesium, you can see in this small pictorial diagram, and beryllium with aluminium. जब हम P ब्लॉक पढ़ेंगे, इसी के अंदर ग्रुप 2 भी पढ़ना है, हमें बेरिलियम पढ़ना है, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम. सो लिथियम विथ मैग्नीशियम and beryllium with aluminium, these are the 2 diagonal relationship that we have to discuss. First आज के सेशन में डिस्कशन करना है लिथियम का diagonal relationship with magnesium. So let's start. The similarity between this lithium and magnesium is particularly striking and arising because that similar sizes. अब आपको लगेगा सर लिथियम कुछ डिफरेंट ग्रुप में है और पीरियड में है, while in case of magnesium भी डिफरेंट पीरियड में है. Atomic radii are, lithium is 152 picometer, while in case of magnesium 160 picometer. Look at the size. Lithium 152 picometer, that is 10 to the power minus 12, while in case of magnesium 160 picometer, almost similar. Fine, though they are staying in different period, then after almost size is same. Another similarity, ionic radii, that is lithium plus 76 picometer, Mg plus 2 72 picometer. So lithium shows the following similar properties with, here in case not beryllium, it is with magnesium in second group. So diagonal relationship यहाँ पे आपको पढ़ना है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, एंड जब हम ग्रुप 2 करेंगे तब हम पढ़ेंगे बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स ऑन डायगोनल रिलेशनशिप. पॉइंट नंबर 1, both Li and Be
are harder but lighter than the another element of this respective group. So जैसे हमने एनोमलस बिहेवियर में पढ़ा था, लिथियम जैसे हार्डर है ऐसा ही मैग्नीशियम भी हार्डर है. सो बोथ Li and Mg both are harder. वहां पे भी हमने पढ़ा था देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रियली वेरी हाई. सेम यहाँ पे भी लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों के केस में सेम होगा. सेकेंड सिमिलैरिटी, बोथ रिएक्ट स्लोली विथ वाटर. Their oxides and hydroxides are much less soluble in their hydroxide decomposition on heating. Third most important point, the oxides that is Li2O and MgO do not combine with the excess, means lithium भी कभी peroxide या superoxide नहीं बना सकता. Likewise, magnesium also cannot convert it into peroxide and superoxides. Fourth, their carbonate अभी हमने डिस्कस किया just because of smaller size. लिथियम जब भी ट्राई करेगा CO3 के पास जाने का, क्या बन जाएगा? Li2O and CO2 is released. Their carbonates decompose easily on heating and converted into oxides and CO2 is released. Their chloride are soluble in ethanol and they are deliquescent in nature. Example के तौर पे LiCl and MgCl2. Better you can write it down LiCl.2H2O and MgCl.8H2O. तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी डिस्कशन हो जाएगा. 8. The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating and form the oxides and CO2. Solid hydrogen carbonate are not formed by lithium and magnesium. Their bicarbonates are stable only and only in solution. So these are the few diagonal relationship. ये भी 3 मार्क के अंदर आएगा. All the 6 points you have to write down. So this is all about your today's session. In this session जो लास्ट के 2 पॉइंट थे, that is most important, that is anomalous behavior of lithium and diagonal relationship with lithium to magnesium. So this is all about your today's session. Thank you.